Hello everyone, let us start with the solution of chemistry. So question number 51 says that if the rate law of a reaction is R equals to K A into B squared, on doubling the concentration of both A and B, the rate of reaction will become. So we have rate equals to K into A into B squared. तो अगर हम A का concentration भी डबल करते हैं और B का concentration भी डबल करते हैं तो B के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स एंड A के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स तो 4 into 2 becomes 8 टाइम्स. So the correct answer will be option number 4. Next question says the total energy of electron in third excited state of lithium 2 plus is. So we know the energy expression E equals to total energy equals to minus 13.6 into Z square upon M square in electron volt units per atom. तो लिथियम के लिए हम जानते हैं कि हमारा Z भी कितना होगा 3 एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट हमें पूछा गया है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस N equals to 4. N will be equals to 4. So now if we plug in this value, so how much it will be? Minus 13.6 into Z square, that is 3 square, that is 9 upon N square, that is 4 square, that is 16. 4 square will be 16 and the unit will be in electron volts. So if we solve this, so your 13.6 times 9 and it will be divided by 16. So your answer turns out to be minus of 7.65 electron volt. Option number 1 is the right answer. Which of the following condition is always true for a working concentration cell? तो concentration cell में हम क्या जानते हैं? Concentration cell में आपका जो cathode and anode है, they both constitute of same electrode dipped in same electrolyte solution. So if same electrode is dipped in same electrolyte solution, then E cell or E naught cell will always be 0. E naught cell will always be 0. Delta G naught cannot be 0 because अगर delta G naught 0 है, that means the cell is in equilibrium and no net current flows through a circuit. Similarly, K cannot be equals to 1 because K will be equals to 1 when delta G naught is 0. Hence, this is also wrong. And if E cell is 0, that means the cell is not in the working condition. So hence, correct answer will be option number 2. Next question says 0.2 grams of an organic compound gave 0.188 grams of AgBr. Then what is the percentage of bromine in the compound? So AgBr contains bromine. So 1 mole of AgBr contains 1 mole of Br. तो AgBr का molecular weight कितना होता है? 188. सिल्वर का 108 एंड ब्रोमीन का 80. तो ब्रोमीन उसके अंदर कितना होगा 80 ग्राम्स. तो 0.188 grams of AgBr will contain. That will be 80 upon 188 into 0.188. So that will be 0.08 grams of bromine. तो अगर हमें mass of bromine मिल चुका है, हमें organic compound का mass पता है, hence the percentage of bromine will be 0.08 upon 0.2 into 100%. So upon solving, this should turn out to be 40%. Option number 4 is the right answer. Moving on to the next question. Which of the following is an incorrect match? Incorrect इसमें से कौन सा हमें बताना है? So we have different vitamins and we have diseases or disease caused by the deficiency of the following vitamins. So vitamin K deficiency causes increased blood clotting time. It is true. So this is true. Vitamin D causes or deficiency of vitamin D causes cleosis. So cleosis is caused by deficiency of vitamin B2. So hence this option is incorrect.
Deficiency of vitamin C causes bleeding gums and B12 deficiency causes pernicious anemia. So correct answer is option number 2. At constant temperature, the highest value of osmotic pressure will be exhibited by 0.1 molar aqueous solution of which of the following. तो हमें पता है कि osmotic pressure considering Van't Hoff factor into the equation is I times CRT. तो सभी का concentration सेम है, R और T सभी का सेम है. R is gas constant, T is temperature. So that means the electrolyte having higher value of I will have higher value of osmotic pressure. तो सुक्रोज क्या होता है? C12 H22 O11. It's a non-electrolyte. Urea is NH2CONH2. It's also a non-electrolyte. सोडियम क्लोराइड NaCl. अच्छा, अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इनके लिए I कितना होता है? 1. I equals to 1. But since NaCl is an electrolyte, assuming 100% dissociation, तो इसका I कितना होगा? 2. Whereas sodium sulfate का I कितना हो जाएगा? 3. Since it will give 2 sodium ions and 1 sulfate ion. Hence, maximum osmotic pressure will be for sodium sulfate. Moving on to the next question. If 0.1 molar aqueous solution of benzoic acid freezes at minus 0.21 degree Celsius, then what is the degree of dissociation of benzoic acid? तो हमें degree of dissociation find करना है, या हम कह सकते हैं हमें alpha find करना है. तो again, this is a question from solution colligative properties. So hence we can write delta TF is I times KF times M. अच्छा, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है और फ्रीज हो रहा है -0.21 पर, दैट मींस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री होता है प्योर वाटर का. हेंस डिप्रेशन कितने का हो जाएगा? 0.21. दैट विल बी 0 माइनस माइनस अ 0.21. आई हमें फाइंड करना है क्योंकि आई से ही हमें किसका वैल्यू मिलेगा? अल्फा का. टाइम्स केएफ. तो केएफ हमें गिवन है 1.86 and molality हमें given है 0.1. So from here, if we solve for I, so that will be 0.21 upon 1.86, 1.86 times 0.1. So this value will come very close to 1.12. 1.1 के आसपास आ जाता है. तो अगर I का वैल्यू इतना है तो we know that I equals to 1 minus alpha plus n alpha, where n is the number of ions furnished by the electrolyte. We are talking about benzoic acid, C6H5COH. So this will dissociate into C6H5, CO minus and H plus. That means N इसका कितना हो जाएगा? 2. So that means we can now put in the values. So I कितना था हमारा? 1.12 equals to 1 minus alpha plus 2 alpha. That is 1 plus alpha. So alpha is 0.12. Or the closest answer is 0.1. Next question is from inorganic chemistry. The reaction of chlorine with hot and concentrated sodium hydroxide gives. So chlorine reacts with hot and concentrated NaOH. NaOH is hot and concentrated, to give or to undergo disproportionation to give NaCl, NaClO3 and water. So chlorine undergoes disproportionation with hot and concentrated NaOH. Option number 3 is the right answer. Next question says, which of the following is acidic in nature? तो इनमें से acidic oxide कौन सा होगा? तो SnO2, PbO2, both of them as well as SnO, all three of them are amphoteric oxides of carbon family. The only acidic oxide among these is germanium dioxide.
Next question says, so this alkene is treated with cold and alkaline KMnO4. तो हम जानते हैं कि ये बेयर्स रिएजेंट होता है, कोल्ड aqueous alkaline KMnO4, and it converts alkene into vicinal diols. So we have a 3-degree alcohol at this point and we have a 2-degree alcohol at this point. और अब हमें क्या कहा जा रहा है कि इसको हमें किसके साथ ट्रीट करना है? दिस इज आवर प्रोडक्ट A. So this A is treated with chromium oxide in acetic acid. So chromium oxide CrO3 is nothing but an oxidant, oxidizing agent. तो ये 3-डिग्री अल्कोहल को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, लेकिन 2-डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है. तो 2-डिग्री अल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन. So the correct answer should be option number 3. Next question is a matching. So we have to match the options in column 1 with options in column 2. तो ये केमिकल बॉन्डिंग के एमओ थ्योरी से रिलेटेड है. Li2, तो Li2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो Li2 कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 एंड सिग्मा 2s बॉन्डिंग में भी 2 होंगे. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. तो Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1. And since all the electrons are paired, hence it will be diamagnetic. So Li2 will have bond order 1 and diamagnetic. So A will have option number 2. What about B2? तो B2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो B2 will have 8 electrons. Beryllium has atomic number of 4. So the configuration 1s2, 1s antibonding 2, sigma 2s2, sigma 2s antibonding 2. तो hence the bond order will be, तो बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा? 0. बट स्टिल द मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक. और अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो डायमैग्नेटिक कहने का कोई मतलब नहीं होता है. बॉन्ड ऑर्डर 0 मींस दिस मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट. तो बेरिलियम के लिए ऑप्शन कौन सा होगा? बी के लिए ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? 3, बिकॉज द बॉन्ड ऑर्डर इज 0. सिमिलरली B2, हम अगर B2 के लिए भी कैलकुलेट करें तो B2 में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इफ यू गो ऑन फिलिंग, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, sigma 2s antibonding 2, that is 8 electron, and then you have pi 2px and pi 2py, 1 electron each. तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे. तो B2 का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? सिंस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2/2 दैट इज 1 एंड द मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक, क्योंकि दोनों ही पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. So the bond order is 1 and the molecule is paramagnetic. So the correct answer will be A2, B3, C1. That means D will be 4. Option number 2. Moving on to the next question. Which of the following will not act as reducing agent? तो इसमें से हमारा reducing agent कौन सा नहीं होगा हमें बताना है. तो reducing agent कैसे आइडेंटिफाई करें? तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्राइटेरिया हो सकता है कि either the element is present in its lowest oxidation state or it is present in its intermediate oxidation state. Because if it is present in its highest oxidation state, then it will act as an oxidant, not reductant or reducing agent. तो अगर हम सल्फर की बात करें, +4, सल्फर के लिए मैक्सिमम कितना होता है? +6. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर -1, ऑक्सीजन के लिए लेट्स से मिनिमम इज -2 एंड मैक्सिमम इज +2. अप टू +2 ऑक्सीजन कैन गो. कार्बन के लिए मैक्सिमम होता है +4
और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है भी कितना, +4, एंड NO2 में नाइट्रोजन का कितना है, +4. नाइट्रोजन कैन गो टू as high as +5. So hence our correct answer will be option number 3, because nitrogen, oxygen and sulfur in option 1, 2 and 4 are present in their intermediate oxidation states. Next question. Purine base among the following is. तो इनमें से purine base हमें कौन सा identify करना है? So it's a fact based question. So your answer is guanine, option number 3. This is a coupling reaction. तो diazonium salt is treated with aniline. तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट क्या होगा, द प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस, ऑल्दो वी हैव टू टेल द कलर ओनली. एंड यहां से आपका HCl रिमूव होगा, HCl रिमूव हो जाएगा, बट ड्यू टू द अटैक ऑफ द नाइट्रोजन इट कन्वर्ट्स इनटू ए डबल बॉन्ड, एजो लिंकेज का फॉर्मेशन होता है. Azo dye formation takes place and the color of this is yellow, and the reaction occurs in acidic pH. Next question. Meta-dinitrobenzene on reaction with ammonium sulfide majorly gives. So meta-dinitrobenzene is this. So this is again a specific reaction. It is also known as xenin reduction. So on treatment with ammonium sulfide, one of the NO2 group gets reduced. Any one of the NO2 group is reduced to NH2 group. So your product will be मेटा नाइट्रो, बिकॉज अब हमारा नंबरिंग इधर से होगा, इट्स अ फंक्शनल ग्रुप, मेटा नाइट्रो एनिल. ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Given below are two statements, one labeled assertion and the other is labeled reason. So the assertion is lambda m naught for a weak electrolyte cannot be obtained by extrapolation of lambda m to zero concentration. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्बडा एम वर्सेस अंडर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का जो प्लॉट होता है वो नॉन लीनियर होता है, हेंस इट कैन नॉट बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू. The reason says lambda m naught for weak electrolyte is obtained by using Coleridge law of independent migration of ion. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कोलराज लॉ. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट since the statement assertion says that it cannot be extrapolated to zero concentration, so we can assume that it is assuming that the curve is non-linear, hence it cannot be extrapolated to zero concentration, hence it has to be calculated by Coleridge law. So the assertion and reason are true, and it is also the correct explanation of assertion. Option number 1. Moving on to the next question. It says the IUPAC name of isooctane is. तो isooctane हमारा क्या होता है? Isooctane is this. This is our isooctane. So it is nothing but 2,2,4 trimethyl pentane. Option number 1. Moving on to the next question. The delta naught of is the octahedral crystal field splitting energy. Then the CFSE for this complex is, ignoring the pairing energy. तो आयरन यहाँ पर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स, एंड साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. तो हमारा जो d ऑर्बिटल है दैट स्प्लिट्स इनटू T2G and EG set.
एंड Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा 3d6 बिकॉज 4s इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड 4s 0 हो जाएगा. So that means we have 6d electrons and because the cyanide ligand is a strong field ligand तो हमारा जो crystal field splitting होगा ये large होगा. तो as a result all the 6 electrons will get paired up in the T2g orbital. तो अगर T2g orbital में pair up होता है against this barycenter तो हमें बताना है कि इसका CFSE कितना होगा. So the CFSE will be equals to that is the number of electrons in T2g orbital that is 6 into minus. तो T2g orbitals के लिए हम कितना लेते हैं that is 2/5 डेल्टा. तो ये होगा हमारा -12/5 डेल्टा O और -2.4 डेल्टा O. तो our correct answer should be option number 1. Question number 69 is a question from equilibrium. For the synthesis of ammonia by the reaction N2 plus thrice H2 gives twice NH3 in the Haber's process, the attainment of equilibrium is correctly predicted by which of the following curves? तो हमें बताना है कि कौन से कर्व में हमारा इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू थिंग्स दैट वी कैन कंसिडर इज कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों ही हमारे रिएक्टेंट्स हैं. तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एंड द प्लॉट्स आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. So concentration of reactants decreases with time and the concentration of product increases with time. First thing is this. So based on this, we can completely rule out option number 2 because यहाँ पर हम देखें तो हमें दिखाया रहा है कि अमोनिया का concentration टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, which is wrong. Ammonia concentration increases with time. But now how do we check that which among the three remaining options are correct? तो देखिए क्योंकि वो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कह रहा है क्वेश्चन में, सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया शुड बी 0 बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज अमोनिया. तो दैट मीन्स योर कर्व शुड स्टार्ट विथ एट t इक्वल्स टू 0 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया शुड ऑल्सो बी 0. तो ये हमें किस ग्राफ में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है हमें. सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर 1. Next question says, which of the following statement, consider the following statement. So statement 1 is, MA3B3 type complex shows facial and meridional isomerism. Bilkul, it is a true, it is a, again, a conceptual question that only A3B3 type complex shows facial and meridional isomerism in octahedral complex. और हमें इन दोनों का फॉर्म भी उसने ड्रॉ करके दिया है. तो अगर हम देखें यहाँ पर all A are adjacent to each other, so this is a facial isomer, and here 2A or 2B are opposite to each other and one is adjacent to the other, so this will be your meridional isomer. तो कह रहा है are optically active and optically inactive respectively, means the facial is optically active and meridional is optically inactive. So this statement is false. Both the facial and meridional isomers are optically inactive. दोनों ही optically inactive होते हैं. तो hence, which answer will be correct? So statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So the correct answer to this should be option number 1. Because for optical inactivity, plane of symmetry should be absent. तो plane of symmetry यहाँ पर आपका दोनों AB like this and AB like this अगर present है तो मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली सिमेट्री आ जाएगी. यू कैन पास द प्लेन लाइक दिस, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम मेरिडोनियल में भी बात करें तो यू कैन पास द प्लेन लाइक दिस. तो बोथ कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री. Moving on to the next question, it says that which of the following reaction will prepare acetone? तो हमें 4 रिएक्शन गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से किसका प्रोडक्ट एसीटोन बनेगा. So if you consider the first reaction, so in presence of mercury ion and acid, water के साथ alkynes react करके क्या बनाते हैं?
it's a Markovnikov type addition. The hydrogen goes to this carbon and इस carbon पर क्या जुड़ जाता है OH, which then tautomerizes to give you acetone. Acetone. So option number 1 is true. What about option number 2? तो KMnO4 H plus heat and we have an alkene. तो simply यहाँ पर क्या होता है? It's an ozonolysis type reaction. तो यहाँ से आपका CC bond break हो जाएगा and you will have ketone. But because we have one carbon on the other side, so we'll have carbon dioxide and water. So this also gives us an acetone. Third, cold and dilute KMnO4. So cold and dilute KMnO4 converts alkene into syndials, vicinal dials. And अगर हम B2H6 in THF in presence of base and H2O2 reaction करें तो यहाँ पर ये जो है हमारा हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होता है in which the OH goes to the less hindered carbon. H goes to the more hindered carbon and OH goes to the less hindered carbon. And after tautomerism, you will have the product as aldehyde, not a ketone. Aldehyde will be formed. So your correct answer should be option 1 and 2. Moving on to the next question. The assertion says less heat is required to vaporize 1 mole of acetone than 1 mole of water. And the reason क्या कह रहा है? Intermolecular dipole-dipole interaction is significantly weaker in acetone than strong hydrogen bonding in water. तो देखिए acetone का structure ऐसा होता है. Acetone is a polar molecule and it can only show dipole-dipole interaction, whereas water is not only polar but is also capable of forming hydrogen bond. तो दैट इज व्हाई वाटर को बॉयल करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा. Acetone can boil at or vaporize at lower temperature. So both assertion and reason are true, and the reason is also the correct explanation of the assertion. Hence the correct answer should be option number 1. The next question says the solubility product of PbSO4 at 298 Kelvin is this much, and the solubility of PbSO4 in 0.4 molar H2SO4 is. तो हमें पता है कि PbSO4 का अगर हमें KSP given है, that means it's a weak electrolyte or a sparingly soluble salt, and it will partially dissociate into Pb2 plus and SO4 2 minus. Whereas H2SO4 is a strong acid, it completely ionizes into 2H plus and SO4 2 minus. तो हमें H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.4 मोलर, तो हमारा सल्फेट आयन यहाँ पर भी कितना होगा? 0.4 मोलर. तो अगर हमें PbSO4 की solubility फाइंड करनी है in the presence of H2SO4 तो कैसे निकालेंगे? तो we can write the KSP expression of PbSO4. That will be concentration of Pb2 plus into concentration of SO4 2 minus. So KSP हमें given है 1.6 into 10 की power minus 8. लेड की जो concentration होगी that will be the new solubility of PbSO4 and सल्फेट का concentration हमें कितना given है? 0.4. So from here if you find the concentration of lead ion तो इसको हम divide कर लेंगे, तो 1.6 into 10 to the power minus 8 divided by 0.4. So that will give you 4 into 10 to the power minus 8 molar or moles per liter. So correct answer will be option number 4. Next question says the optically active biphenyl among the following is. तो एक बाइफिनाइल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब इसके दोनों ही ऑर्थो पोजीशन आर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट ग्रुप्स. मींस यू कैन हैव सेम ग्रुप ऑन बोथ द बेंजीन रिंग, बट एक बेंजीन रिंग पर दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट. सो
Only option which has this combination is option number 2. Next question says, the reaction of primary and secondary alcohol with HCl requires ZnCl2 as catalyst. लुकस कैटलिस्ट है, लुकस रिएजेंट है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है, इसलिए वी नीड ZnCl2. बट स्टेटमेंट 2 में क्या कर रहा है? द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl is conducted by simply shaking the reaction mixture at room temperature. So this statement is true and this statement is also true. क्योंकि हमें अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है तो हमें और वहां लेविस एसिड की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज tertiary alcohols can easily ionize in the presence of acid to give you a stable 3-degree carbocation. So hence you do not require a Lewis acid. So both the statement 1 as well as 2 are correct. Moving on to the next question. The structural unit of borax is, तो हम बोरैक्स जानते हैं Na2B4O7.10H2, लेकिन स्ट्रक्चरली इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2B2O5OH4 and as a result you have 8 water. तो हमें सिर्फ एनायनिक पार्ट पूछा गया है, तो हमारा एनायनिक पार्ट कौन सा होगा? ये वाला. दिस इज आवर एनायनिक पार्ट. तो आवर करेक्ट आंसर शुड बी second option, B4O5OH4, 2 negative, since we have 2 sodium. Next question, the major product of the following reaction will be. तो बेंजीन पर पहले प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन किया जा रहा है, तो दिस इज फ्रिल-क्राफ्ट्स रिएक्शन. तो और फ्रिल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन. तो हमारा जो कार्बोकैटायन है, तो फर्स्ट तो कार्बोकैटायन हमारा ये फॉर्म होगा, बट सिंस 2 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोर स्टेबल, तो इट विल अंडरगो ए हाइड्राइड शिफ्ट फॉर्मिंग ए 2 डिग्री कार्बोकैटायन. हेंस जो ग्रुप हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ेगा दैट विल बी एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप और वी कॉल इट क्यूमिन. नाउ सेकंड स्टेप में, so this is our product A. Now second step में it is treated with bromine in the presence of sunlight, H nu. तो bromine in the presence of H nu always forms or always attacks at that position where you get most stable free radical. तो यहां पर क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है, तो यहां पर 3 डिग्री रेडिकल विल बी द मोस्ट स्टेबल रेडिकल. हेंस आपका ब्रोमीन उसी पोजीशन पर आकर जुड़ जाएगा. तो योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of heat evolved when 500 ml 0.1 molar HCl is mixed with 200 ml 0.2 molar NaOH solution. So 500 ml 0.1 molar HCl, that will be 50 millimoles of HCl, and 200 ml 0.2 molar NaOH, that will be 40 millimoles of NaOH. अब क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमें पता है ऑल्दो वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन हम कहते हैं, दोनों का ही एन फैक्टर 1 है. हेंस 1 मोल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस गिव्स अस 57.1 किलोजूल्स ऑफ हीट. दिस मच हीट इज रिलीज्ड. लेकिन हमारे पास NaOH 40 मिलीमोल्स है, whereas HCl 50 मिलीमोल्स है. दैट मींस NaOH in this case is our limiting reagent. तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कितने का होगा? 40 मिलीमोल्स का ही होगा. तो 40 मिलीमोल से कितना हीट रिलीज होगा? दैट विल बी 57.1 किलो जूल के लिए 10 to the power 3 जूल एंड 40 मिलीमोल्स दैट इज 10 to the power -3, दिस मच जूल. तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर नियरली कितना आ जाएगा? 2.28 किलो जूल. सेकंड ऑप्शन. Next question says, which of the following has lowest value
of heat of atomization. So the correct answer of this question will be zinc. Why zinc? Because zinc का configuration 4s2 और 3d10 4s2 होता है. It has no unpaired electron. तो क्योंकि इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग सबसे वीकेस्ट होती है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, hence it has lowest value of heat of atomization. Next question. Which of the following pair of d orbital have electron density along the axis? तो along the axis मतलब कौन से हमारे एक्शियल d ऑर्बिटल्स हैं. तो हमारे पास दो ही एक्शियल d ऑर्बिटल्स होते हैं. वन इज d x square y square and the other one is d z square, like this. So the correct answer is option number 4. Next question. 1 gram atom of nitrogen represents. Okay. So since it says 1 gram atom, एक gram atom कह रहा है, that means it is 1 mole, लेकिन किसका 1 gram atom is 1 mole, but किसका होगा n का होगा, not n2. Why? Because it says gram atom, not gram molecule. If the option would say gram molecule, then it would be 1 mole of n2. So 1 mole of n will be equivalent to Avogadro number of n2 molecules. Wrong. It will be half of Avogadro number because 1 mole of n का कितना होगा, half mole of n2 होगा, half mole of n2 होगा. 1 mole of n2 molecule is also wrong. 11.2 liters of nitrogen at 1 atmosphere 273 Kelvin. This is true because half mole is 11.2 liters. And 14 gram of nitrogen, and half mole को अगर molar mass से हम multiply कर लें, so that will also give us 14 grams. So option C and D are correct. Next question says, which of the following reaction consider the following reaction sequence and हमें find करना है major product B. Major product B. तो फर्स्ट केस में प्राइमरी अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट किया गया है, पीसीसी के साथ. तो पीसीसी इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दैट मींस द अल्कोहल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू एल्डिहाइड. एल्डिहाइड, दिस इज ए. एंड ए को ट्रीट किया गया है हाइड्रोजन KOH फॉलोड इन द प्रेजेंस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल. तो दिस इज नथिंग बट वुल्फ किश्नर रिडक्शन. तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है that gets reduced into alkane. So your answer will be option number 2. Next question. The major product of the following reaction is. So we have an ether, we have a cyclic ether, and it is treated with Grignard reagent followed by hydrolysis. तो ग्रिग्नर्ड रिएजेंट में हमें पता है कि जो कार्बन आयन होता है वो अल्काइल कार्बन आयन होता है, and it attacks the less hindered carbon, opening the carbon oxygen bond. तो that means हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, this O पर आ जाएगा नेगेटिव, यहां पर कार्बन, और इसी से क्या जुड़ जाएगा CH3. अपॉन हाइड्रोलिसिस दिस O कन्वर्ट्स इनटू OH. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2. तो दिस इज नथिंग बट एन SN2 रिएक्शन. Next, the electrophile in the given reaction is. So we know that this is a Reimer-Tiemann reaction. So chloroform in the presence of NaOH forms the electrophile, that is carbene. CCl2, carbene. Moving on to the next question. Consider the following statement about interstitial compounds. तो D block में जो हम interstitial compounds पढ़ते हैं, they are chemically inert. True. Their reactivity decreases, the inertness increases, chemically inert होते हैं.
These are formed when small atoms like hydrogen, carbon, and nitrogen are trapped in the crystal lattice of the metals. This statement is also true क्योंकि नॉन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं. इनमें किसी भी तरह की कोवैलेंट या मेटेलिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट नहीं होती है. Their melting points are lower than those of pure metal. This statement is false because the melting point of interstitial compounds are higher than the corresponding metals. Hence, option A and B are correct. Next question, for which of the following electrolyte molar conductance at infinite dilution or zero concentration cannot be obtained by graphical method? तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टेंस ग्राफिकली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक एसिड्स और वीक बेसेस. So the correct answer will be option number 4, formic acid. क्योंकि KCl is a salt, HCl is a strong acid, sodium acetate is also a salt. Next question says, electron affinity of chlorine is higher than fluorine. This is true. Chlorine has higher electron affinity compared to fluorine because of larger size. The reason says electron negativity of fluorine is higher than chlorine. अच्छा, फैक्ट वाइज तो ये सही है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन क्लोरीन, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो hence both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. Option number 2 will be the right answer. Next question says, intermolecular hydrogen bond results into association of molecule. तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स. तो हम इसके वजह इंटरमॉलिक्युलर बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से two or more molecule get associated with one another. So this statement is true. Intramolecular hydrogen bond results in cyclization of molecule and prevents their association. This statement is also true because, for example, if you consider ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं और इसके वजह से क्या होता है, एक साइक्लाइजेशन होता है. एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट अंडरगो एसोसिएशन विद अदर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मॉलिक्यूल्स. तो hence both statement 1 as well as statement 2 are correct. Question number 89. The reaction 3ClO gives ClO3 minus plus 2Cl minus is example of disproportionation. चलिए चेक कर लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, राइट हैंड साइड में +5 एंड -1. तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी कर रहा है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी कर रहा है. तो हेंस इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. In ClO3 minus, the oxidation state of chlorine is +7. This is wrong. The oxidation state is +5. Hence, A is true, but R is not true or not correct. Option number 3. Next question. The correct order of boiling point of isomeric amines. तो isomeric amines में simply हम क्या जानते हैं? Amine has a polar group. तो isomeric amine में जितनी branching बढ़ती है, branching in the form of degree of nitrogen. So rather than classifying as branching, let us write it as 1 degree amine, or we can write RNH2. RNH R secondary amine and RNR. अच्छा, माइंड यू सभी में R ग्रुप हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्बन सभी में क्या होना चाहिए, सेम, बिकॉज आइसोमेरिक अमीन्स की बात की जा रही है. तो इट इज नॉट लाइक नंबर ऑफ कार्बन आर इंक्रीजिंग, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर सेम. तो जैसे जैसे हमारा ब्रांचिंग होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी है नाइट्रोजन की, दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, हेंस द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस.
क्वेश्चन नंबर 91 अगेन हमें मैचिंग करने को कहा जा रहा है. हीटिंग बेरियम एजाइड. सो बेरियम एजाइड इज दिस अजाइड आयन N3 माइनस. तो अजाइड आयन को हीट करने पर यू गेट मेटल बेरियम, बेरियम सॉलिड, and it releases nitrogen gas. So you get pure nitrogen by this method. तो A का होगा option number 4. And if you see, only one option has A with 4, hence the correct answer will be option number 4. Haber's process, you know, is for ammonia. Contact process is for sulfuric acid using vanadium pentoxide. And Decon's process is for preparation of chlorine from HCl. Next question says the number of aromatic isomers of C7H8OR. तो हमें aromatic isomers ड्रॉ करने हैं. तो that means and we have 7 कार्बन. तो इसका मतलब एक बेंजीन रिंग होगा, एक बेंजीन रिंग. तो 6 कार्बन हो गए, 1 मोर कार्बन है. तो हम इसको क्या बना सकते हैं? ईथर बना सकते हैं, OCH3, because we have 1 more oxygen also. और टोटल हाइड्रोजन भी 8 हो जाएंगे. तो 5 हाइड्रोजन ऑन द रिंग एंड 3 हियर. नेक्स्ट वी कैन ड्रॉ. क्योंकि हमें एरोमेटिक बनाना है तो वी कैन पुट OH हियर एंड मिथाइल को हम ऑर्थो पर रख सकते हैं. कीपिंग OH, मिथाइल को हम मेटा पर रख सकते हैं. एंड कीपिंग OH एट सेम पोजीशन, CH3 को हम पैरा पोजीशन पर भी रख सकते हैं. But we cannot draw this isomer because it says aromatic isomer. तो क्योंकि यहाँ पर OH आपके रिंग से अटैच नहीं है, तो this becomes an aliphatic alcohol. It becomes an aliphatic alcohol. So probably the correct answer is option number 4. Next question says benzene is treated with hydrogen and nickel in the presence of heat and 3 moles of chlorine in the presence of UV light and heat. So in the presence of hydrogen and nickel catalyst, benzene gets converted into cyclohexane, complete hydrogenation हो जाता है. And in the presence of chlorine and sunlight, it forms benzene hexachloride, BHC, or which is called as gamaxine. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4. Moving on to the next question, the pH of 0.04 molar ammonia solution which is 5% ionized will be. तो अमोनिया एक वीक बेस है और 5% आयोनाइज्ड है. दैट मींस अल्फा इज 5% और हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है? 0.04. सो द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन विल बी C alpha, that is 0.04 times 5%. तो ये हमारा हो जाएगा, दिस विल बी 20/10⁴, or we can say 2 into 10⁻³ मोलर. तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? POH, that will be negative log of 2 into 10⁻³ so that will be 0.3 and that is -3, that is 2.7. But question में हमें पूछा गया है pH, so pH will be 14 minus P of OH, that will be 11.3. Next question says successive half-life of a particular first order reaction remains the same. तो हमें पता है half-life of a first order reaction is 0.693 by K. So for a first order reaction, K does not change. Hence consecutive half-life की जो time duration होती है, time interval होती है, that also remains same. Hence the statement is true. The half-life of a zero order reaction increases with decrease in initial concentration. तो for a zero order half-life क्या होता है? It is A0/2K.
तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है then the half life should also decrease, not increase. Hence this statement is false. So statement 1 is true or correct, but statement 2 is incorrect. Next question says, which among the following ligand has maximum field strength? So we can find this from the spectrochemical series. So spectrochemical series के according जो carbon donor ligands होते हैं, they are the strongest donors or they have the maximum field strength. Hence option number 2 is the right answer. Next question says, which of the following compound has highest heat of hydrogenation? The heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene. And जो stability of alkene है वो directly proportional होता है with number of hyperconjugations or alpha hydrogens, number of alpha hydrogens available for hyperconjugation. तो अब अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमें क्या बताना है, हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दैट मीन्स हमारा एल्किन क्या होना चाहिए, लीस्ट स्टेबल, या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, लीस्ट। तो फर्स्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 + 3 6 + 3 9 + 2 11। सेकेंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड सी से जो डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन होंगे, 3 + 1 4। थर्ड वाले में कितने होंगे, 2 + 1 3। एंड फोर्थ वाले में कितने होंगे, 3 + 3 6 + 1 7। Hence the correct answer will be option number 3. Next question says, we are given two reactions with their delta H values और हमें find करना है delta H for this reaction. तो A + B gives 2x + D. तो देखिए यहां पर हम देख सकते हैं A जो है ये हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा। तो लेट मी राइट दैट फर्स्ट इक्वेशन, 2C + 3D। इसका डेल्टा H A है, यहां पर हम A लिख लेते हैं। अच्छा, लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर हमें 3B भी दिख रहा है और इधर भी B दिख रहा है। सो लेट अस नॉट कंसीडर B, लेट अस कंसीडर X। अच्छा लुक, वेयर इज X? वी हैव X इन सेकंड इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर X LHS में है। हमें X रिक्वायर्ड इक्वेशन में कहा चाहिए, RHS में, और उसका कोएफिशिएंट भी हमें क्या चाहिए, 2। दैट मीन्स हमने सेकंड इक्वेशन को ऑब्वियसली रिवर्स किया होगा। only then you will have X on the right hand side and you have to multiply it by 2 also, तभी X का कोएफिशिएंट भी क्या होगा, 2। तो क्योंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो हेंस डेल्टा H becomes नेगेटिव, एंड क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है हेंस 2B। तो नाउ इफ यू ऐड these equations, तो here you have 2C, here you have 2C, 2C cancels, right? And now if you arrange A, अच्छा here you have 3B, here you have 2B, तो नेट लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचेगा, B। सिमिलरली you have 2D, here you have 3D, तो राइट हैंड साइड में आपका क्या बचेगा, D, and you have 2X। तो since you have added both the equation, so their delta H will also get added, that will be A minus 2B, option number 4. Next question says, which one is wrong statement? The uncertainty principle is delta X times delta V is greater than equals to H upon 4 pi m. So uncertainty in position times uncertainty in velocity. तो हमें पता है delta X times delta P is greater than H upon 4 pi. And if you break this delta P or uncertainty in momentum into mass times uncertainty in velocity, so we can take m to the RHS. Hence this expression is correct.
de Broglie's wavelength is given by this expression lambda equals to h upon under root of twice m kinetic energy, where m is the mass of particle and kinetic energy k is the kinetic energy of the particle. This is also correct क्योंकि ये हमारा इस इक्वेशन से आता है. लैम्बडा इज h upon p and we know that p or kinetic energy equals to p square upon 2m. Third statement says the energy of 3p orbital is greater than 3s orbital in case of hydrogen-like atoms. This statement is incorrect. For hydrogen-like atom, for a given value of n, all the orbitals have same energy for a given value of n. That means अगर third orbit की हम बात कर रहे हैं तो for an hydrogen-like atom, 3s, 3p as well as 3d all will be at same energy level. All the orbitals and all the subshells will be degenerate. Hence 3 is the correct answer. And the last question says, benzoic acid on reaction with bromine FeBr3 gives para-bromobenzoic acid. So benzoic acid is this, और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3. तो हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप and minus M group, and minus M groups are meta directors. So your product will be metabromo benzoic acid. Hence this statement is false. Statement 2 says carboxylic group is orthopara directing in nature in electrophilic substitution reaction. So this statement is also wrong. Carboxylic acid group is a meta director. So both statement 1 as well as statement 2 are incorrect. Option number 2.